All eyes are on the Rajasthan High Court this morning as they resume hearing on the plea that was filed by Sachin Pilot and his loyalists challenging the Speaker's disqualification notice. The High Court will begin hearing arguments at 10 a.m. The Speaker's counsel is likely to continue his arguments. Earlier in court, Pilot's counsels had argued that Pilot and the rebels' action cannot be termed as a revolt but an exercise of their right to speech. The Speaker's counsel, Abhishek Manu Singhvi, retaliated by saying that Pilot's plea is premature. Amid all this, there is also speculation that the Congress camp may order a floor test after the High Court hearing. With the support of two BTP MLAs, that's the Bharatiya Tribal Party, Chief Minister Ashok Gehlot maintains that his government is in majority with 102 MLA support, one more than the desired magic number of 101. Meanwhile, trouble is mounting on the Gehlot camp as MLAs lodged in the Fairmont Hotel in Jaipur. A complaint has been lodged in court against 104 Gehlot camp MLAs, including Chief Minister Ashok Gehlot, for flouting COVID norms under the Pandemic Act. Complainant has alleged that the Congress MLAs lodged in the hotel have been violating social distancing norms, and the complainant has also said that maximum gathering currently allowed is 50, and that's too for marriages. But in the hotel, over 100 Congress MLAs have been seen playing football, Ludo and watching TV. Interestingly, all this while the Chief Minister and his former deputy remain locked in a bitter war. So even as the Gehlot government made a paper-thin majority claim, the phone scandal refuses to die down. Congress and BJP continue to spar over the audio gate in Rajasthan. All the latest political reactions in this report. Paper-thin majority claim. A raging phone-tapping scandal. MLAs cooling their heels in resort amid COVID crisis. Amidst all this, Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot might opt for a trust vote. After meeting the governor and claiming support of 102 MLAs, just one more than magic number of 101. Sources say that the Rajasthan Assembly session is likely to take place on Wednesday, depending on High Court's ruling on Speaker's disqualification notice to Pilot camp on Tuesday. But the BJP is still playing wait and watch, weighed the option of moving a no-trust motion. बीजेपी ने पहले भी प्रोटेस्ट के लिए न हमने मांग की न हम अभी भी नहीं कर रहे हैं। हमारा कहीं का रोल नहीं है, ये तो जबरदस्ती घसीटे जा रहे हैं हमको, घर की लड़ाई को हमारे माथे लादने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी कहीं कुछ है नहीं। The Rajasthan government meanwhile formed a special probe team to look into the leaked tapes which the Congress claims that BJP tried to lure its MLAs. मेरे पास इसने वसुंधरा जी का नाम लिया था 7-8 महीने पहले और मेरे से मिला भी था और ये काफी दिन से संजय जैन सक्रिय था। एसओजी जांच कर रही है, उसमें आ जाएगा जो आना है। गजेंद्र सिंह जी का इस ऑडियो से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं गजेंद्र सिंह जी की वॉइस को अच्छी तरह से जानता हूं और गजेंद्र सिंह जी की ये आवाज ही नहीं है। गृह विभाग भारत सरकार का इसलिए कूदा है कि कहीं न कहीं भारत सरकार के नेताओं ने वहां जाकर रिक्वेस्ट की है कि हम फंस जाएंगे। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान के पास पूरे सबूत है। मैं तो गुलाब जी कटारिया से उम्मीद करता था, वो समझदार व्यक्ति हैं, तुरंत फर्जी घोषित कर दिया ऑडियो को। पहले ऑडियो की जांच तो होने तो दूसरे दिन सीएम का बयान आ गया कि यदि फर्जी घोषित हो जाता है, ये गलत साबित हो जाता है तो मैं राजनीति संन्यास लूंगा। ये दे रहे हैं क्या? BJP ally and RLP chief Hanuman Beniwal accused the Gehlot government of indulging in corruption. In an exclusive conversation with India Today's Paulami Saha, he reiterated his earlier claims that ex-Chief Minister Vasundhara Raje is helping the Gehlot government to survive. ये आरोप निराधार है। भाजपा को खरीद फरोख्त की आवश्यकता ही नहीं है। भाजपा के पास 72 और 3 के 75 विधायक तो हम खुद हैं। सारे फोन सर्विलेंस में हैं, सबके MLA जो उनके आसपास के लोग और MP मिनिस्टर सारे फोन पर। ऐसे कोई थोड़ा ही चलता है। ये भाई वसुंधरा जी अशोक गहलोत की कांग्रेस की मदद कर रही है। वो ट्वीट मैंने ट्वीट है मेरे हैंडल पे।
As the Congress struggles to overcome the desert storm, it may all boil down to hard numbers on floor of the assembly. Till then, it is a wait for governance in Rajasthan. With Devankur Vadhavan in Jaipur and Polami Saha in Delhi, Bureau Report, India Today. Amid reports of Prime Minister Modi visiting Ayodhya on August 5th to lay the foundation stone for the Ram Mandir, you've got NCP Chief Sharad Pawar taking a dig at the Modi government, saying that some people think that building a Ram temple will eliminate COVID-19. Pawar added that in the midst of a pandemic, the government's focus should be on reviving the economy instead of building the Ram Mandir. Meanwhile, the Ram Mandir Trust has agreed on certain changes to the design of the temple. While the look of the temple will remain the same, the number of domes have been increased to 5 from 3. It will be the only temple in the world with 5 domes. Temple will be a 3-storied structure instead of 2, and the height will therefore increase from 128 feet to 161 feet. The length and breadth of this temple will be 268 feet and 140 feet. There will be a total of 318 pillars in the structure, with 106 pillars on each floor. The temple will be spread over up to 120 acres of land. मंदिर बांधून कदाचित कोणाला जाईल आणि त्या बांधलेल्या कदाचित त्यांनी हा कार्यक्रम घेतला असावा मला माहिती नाही नाही मला माहिती पण आमच्या दृष्टीने आम्हाला कोरोना हे संकट महत्त्वाचं वाटतं आणि कोरोनाच्यामुळं हे जे लॉकडाऊन आणि या सगळ्या गोष्टी होत आहेत याचा सवन अडचण फरक होतं छोट्या मोठ्या व्यवसायांचा फरक होतो त्याची आम्हाला चिंता आहे आणि राज्य आणि केंद्र सरकारने त्या गोष्टीत अधिक लक्ष घालावं असा आमचा आग्रह. भव्य राम मंदिर बने ये पूरे देश की इच्छा थी. इसको कोरोना से जोड़ना और पवार साहब का ये कहना कि इससे कोरोना खत्म नहीं होगा, ये सही नहीं. मैं मानता हूं कि कोरोना से भी एक मजबूत लड़ाई लड़ी जाएगी और राम मंदिर का निर्माण भी होगा. जिस तरह देश में अन्य काम में भी हो रहे हैं, उस तरह लोगों की इच्छा के अनुसार राम मंदिर का निर्माण भी शुरू होगा. और कोरोना से तो एक बड़ी मजबूत लड़ाई महाराष्ट्र में लड़ने की जरूरत है.